Professor Dr. V. Gupta, Cardiology, Delhi Apollo Hospital, on 3rd April, and I'm going to show you a small demonstration of the live angiography, which you will like it. So we have a patient who is 36-year-old male, and 36 साल का पेशेंट है, जिसके हमने साल भर पहले स्टेंट लगाए थे हमने, और साल भर पहले लगाए थे और उनको 4 जगह ब्लॉकेज थे. There were 4 blockages in this patient, a young man of 36 without any risk factors of diabetes or high blood pressure. This is very strange. Many times you have problems atherosclerotic heart disease, coronary artery disease, and when there is no risk factor. Possibly COVID, I don't know. The young patients are getting prayed. Now we are doing a check angiography after 1 year. So we have already taken the angiographic shots from the radial artery to left system. This is the radial approach, and now we are going to see the right. We have done. We did total 4 stents, and patient does not have any major symptom, but as a protocol, I thought young man 4 stents, we should do a check angiography. He has some mild dyspnea which is not clear. So 3 stents out of 4 we have already seen on the left side. LED made those stents, 2 stents in LED, 1 in circumflex. They are all normal. I will show the other implication. Now we are going to check the right coronary artery. This is the catheter, and you can see the stent is there. I will just inject it and see. Perfectly all right. So the stent which was done in 2024, you can see there is absolutely not a very small portion of restenosis, and this is very gratifying. So अच्छा लगता है सोच के. We are very delighted to see that the right coronary artery stent is perfectly all right. Sister अपना उंगली लगाइए वहाँ पे. This is the stent. Yes, you can see this is the artery and there is a stent there. और ये stent दिख रहा है और there is no restenosis. You show the left system. अभी हमने जो लेफ्ट के रिकॉर्ड किए हैं, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है. इधर स्टेंट देयर, यस, प्रॉक्सिमल सेगमेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल. आगे बढ़ाइए. एंड दिस इज द एलईडी. 2 स्टेंट्स वी हैव डन. नीचे वाला स्टेंट लगाइए. नीचे दिख रहा है ना, हम नीचे, हाँ ये नहीं, ऊपर बीच में, हाँ ये, और हाँ ये. इवन द सेकेंड स्टेंट इज परफेक्टली नॉर्मल. शो द सर्कमफ्लेक्स. अच्छा, नीचे दिखा है यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स में. ये इधर ये इस आर्टरी में. यस यस, हाथ ऊपर करिए थोड़ा सा. ये दिस इज द एरिया ऑफ अनदर स्टेंट, द थर्ड स्टेंट, एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो इट इज although there are some plaques in various other location. इधर दिखाइए मेरी तरफ. So all the 4 stents, 2 in LED, 1 in circumflex, are doing well. देख इनका रीनल कर लेते हैं. पहले LV कर लेते हैं. LV तो he had an LV which is पहले वो कर रीनल कर लेते हैं, फिर LV में डाल देंगे. तो खुद चेंज करना पड़ेगा लोकेशन. लो बैग लो. So young man, 36-year-old, who had 4 stents 1 year back, and the patient is asymptomatic, and all the 4 stents are doing well. Bypass surgery and angioplasty, there are 2 techniques for revascularization, and उसमें हम जो bypass करते हैं उसमें हम लोग now I am going to see the renal artery. So the catheter is now through the radial artery inside the aorta, descending aorta, and I will inject the dye into the renal arteries just to be well, otherwise there is no symptom. But whenever we do angiography, हम लोग एक renal artery का shot ले लेते हैं just to confirm that everything is fine. So both the renal arteries are normal, and I will pull out the catheter. Come back to me. So angiography we have done in this patient. And we have done angiography, and all the 4 stents are perfectly all right. And this is the beauty. अब आपको एक बताना चाहते हैं. कुछ लोग पूछते हैं कि whether the stents are lifelong or they are not lifelong. So whenever you have I will tell you that restenosis in the, give me LV. Okay. So restenosis
normally it happens only within the first 6 months. If it does not happen within 6 months to 9 months, restenosis मतलब recurrence of the blockage in the stent. This is different from atherosclerosis because this is because of new intimal formation. Whenever you put a stent, body reacts by increasing the fibrosis inside the stent area. That is the healing process. आप लोग सब पता है कहीं कट जाता है किसी को तो उस समय स्कार बनता है, तो स्कार बन जाता है जो कि एक फाइब्रोसिस की वजह से होता है. So similarly, this healing process takes place inside the stent. So when the stent was done for the first time in 1987 and by Dr. Sigwart, and then there were trials, stent versus plain angioplasty in 93, Bailey stent trial and stress trial. At that time the restenosis rate, recurrence inside the stent was about 10%. यानी कि 100 में से 10 लोगों को फिर से रिकरेंस हो जाएगी. उसके बाद ड्रग कोटेड स्टेंट आए और ड्रग कोटेड स्टेंट आने के बाद हम लोग का अब रिकरेंस रेट इज ओनली 2%. तो नाउ द स्टेंट हैज रिवोल्यूशन समझते हैं रेवोल्यूशन. तो स्टेंट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द सिस्टम ऑफ angioplasty. Now I am putting the catheter inside the left ventricle. So this is a catheter which is gone into the ventricle. अभी तक जो हमने एंजियोग्राफी दिखाई है वो दिखाई है actually we have shown the angiography of the coronary arteries. Now I am showing the angiography of the ventricle. इससे पता लगेगा कि हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट की पंपिंग functions. How is the heart pumping function? So I'll inject the dye inside the ventricle just to see that heart is pumping well. This is a complete angiography. I'll inject the dye, you can see. So there is a mild hypokinesia and ejection fraction is slightly reduced as compared to normal. I would keep it something like 40%, but we will do echocardiography and check it. Come back to me. So I was telling that the restenosis rate was 10% at the time of non-drug eluting stent. They are known as bare metal stent. A lot of scientific advancement. और उसके बाद we have now drug coated stents. The stent material has changed from stainless steel to cobalt chromium, and we are now able to have only 2% restenosis. And fortunately, this patient में there is no restenosis. So this patient, I feel that this is now lifelong. The stent gives you life, and these are lifelong. So thank you very much. You have seen me, and Madam was doing the recording. My technician team, Mr. Lalit and Mr. So this is Apollo Hospital, and we try to do a good job. Most scientific work we do, and you have seen that this patient who received 4 stents. All the 4 stents have absolutely no recurrence. That means there is no. You are very happy. आप सुन रहे हैं सारा मेरी कमेंट्री. तो पेशेंट के टीचिंग चलता रहता है. I like to teach and give you the message. I wanted to give you one small message for the young cardiologist. Show me the diagonal which is pinch. You can see when we had done the first shot. तुम चले जाओ मैं चलाता हूँ ठीक. I'll show you when we had done first stent in the LED. So we had put across the diagonal. So a lot of people they get idea कि हम इसको क्या करें, diagonal है, bypass surgery करा दें, क्या नहीं करें. So this is the first stent and the diagonal is arising here. Just stop for a while. Yes. So this is the first stent and this is the diagonal branch. So this diagonal branch has some disease. This is, I would say, not a large branch. It is an average size of artery. But see the beauty of the stent. If despite putting a stent across the diagonal, the flow of the diagonal is completely normal. So there is no pinching. So this is now open cell stents are there. Normally when you put a stent across a branch, there is a likelihood of pinching of that particular branch. But in this case, there is absolutely no pinching, and the branch जिसके across हमने stent लगाया है वो branch भी बिल्कुल normal काम कर रही है. तो आपके उसमें थोड़ा सा 50 to 60-70% blockage है, but we don't need to worry about. He has got some plaquing in the ostial LAD,
ही विल रिमेन ऑन मेडिकल फॉलोअप। दवाई आपको ज़िंदगी भर खानी है कि अभी स्टेंट तो अच्छा काम कर रहे हैं और जगह ब्लॉकेज ना आए। अगर आते तो उसमें स्टेंट लग जाएगा, लेकिन ना आए इसके लिए दवा खानी पड़ेगी। बट यू कैन नॉट बी 100% श्योर and therefore you have to take medicine. So 4 stent in a young 36-year-old, 1 year follow-up, absolutely normal, no recurrence. I was expecting कि ऐसा ना हो कि एक आध जगह स्टेंट लगाना फिर से पड़ जाए, तो वो मुझे सोच रहा था। देखिए मैंने इनके लेफ्ट रेडियल आर्टरी से किया है and this radial artery will be removed very soon and then patient can be discharged today itself. आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गाना गाना चाहते हैं? गाना मन में तो गाना गा दीजिए। गाना गाते हैं? गा कौन सा गाओगे? गा दो, शुरू करो, जल्दी शुरू करो। मैं पेशेंट से गाना इसलिए सुनता हूँ, मैं पेशेंट को और खुश देखना चाहता हूँ जितना खुश है वो। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ घबरा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी तो तुम घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, है ऐसे नाहें भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत बढ़िया गाना गाया आपने। ये राजेश खन्ना का गाना है जो किशोर कुमार ने गाया था, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर है मेरे ख्याल से आर.डी. बर्मन। और इस गाने की कहानी ये है, वैसे तो टीचिंग प्रोग्राम चल रहा है, आपको शायद नहीं पता है। जब ये गाना का संगीत तैयार किया आर.डी. बर्मन ने, तो ना तो किशोर कुमार को पसंद आया और ना राजेश खन्ना को। दोनों ने कहा ये गाना बहुत स्लो है, ये पिक्चर बेकार कर देगा। तो आर.डी. बर्मन ने बहुत सोचा, उसने कहा नहीं, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको स्पीड पर जहाँ स्पीड अप करेंगे गाना मज़ा नहीं आएगा। तो फाइनली उनकी बात माननी पड़ी किशोर कुमार को, और वो गाना सुपर हिट हो गया। जो आप भी गाना गा रहे हैं, बहुत पुरानी पिक्चर है, मेरे जीवन साथी। आपको गाना यही पसंद आया था? मुझे मेरा बड़ा संगीत बड़ा अच्छा गाना है मेरे लिए। आपने सोच रखा था ये गाना गाएंगे? नहीं, यही याद आ गया था। ये याद आ गया। इतनी खुशी हुई आपको कि ये गाना याद आ गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल ऑन 3rd of April 2025. 4 stents done 6 months back. 1 year back. Absolutely normal, no recurrence, no new intimal hyperplasia, no MLD, minimal lumen diameter is absolutely normal, and there is no instant restenosis. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo on 3rd April, talking about instant restenosis, history of stent, Facebook Live, angiography, and angiography is such a small test, simple test. अगर आपसे कहा जाए कराइए तो करा लीजिएगा, चाहे कहीं भी कराइए, but you should get it done because it's a life-saving test. Dr. Vivek Gupta on 3rd April from Apollo Delhi. Thank you.